Now, of course, we started this lecture with the aggregate demand and aggregate supply model, and we started with short-run macroeconomics regarding the aggregate demand and aggregate supply model. We know that the labor wages specifically they are fixed; they should not be changed, and we also know that the supply of technology and capital and components like these they are also fixed. They need not to be changed to remain to let it be the short run macroeconomics. So on y-axis we will take the price level, okay, and on x-axis we will take the real GDP. Okay. Now we have two curves over here. One is aggregate demand and one is aggregate supply. Every one of you is every one of you knows the concepts of demand and supply very clearly. You have studied microeconomics in detail in the previous semester. So it is clear to all of us that there is always a negative relationship between prices and demand. Okay? Why? Because when the price of a good increases, the demand for the good decreases. Okay, and when the prices of goods increases, the supply of goods also increases. That is, there is a positive relationship between supply and demand. So therefore, हमारे पास क्या होगा? These curves will have shapes regarding their relationships with the price levels. As I have told you that there is a negative relationship between the prices and aggregate demand. So therefore, aggregate demand curve is downward sloping demand curve, and there is a positive relationship between the aggregate supply curve. So therefore, it is an upward sloping demand curve. And of course, we know that the point where both these curves intersect each other is that point where the prices that are charged by the producers for their given products are the same prices on which the consumers are willing to buy that particular product. Okay? And now here we are concerned with macroeconomics. So these are the prices which are accepted by the people or the consumers as a whole in the economy. ठीक, इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं ये एग्रीगेट level पे all the people are willing to purchase these goods at P naught prices, and the output level that is produced in the economy is Y naught. In macroeconomics, for output we will use Y, the symbol Y, and prices का वही symbol रहेगा जो हमने microeconomics में use किया था, that was P. Whereas in microeconomics mostly हम लोग output के लिए Q का symbol use करते थे, यहाँ पे हम Y का symbol use करेंगे. So therefore, the aggregate demand and aggregate supply line shows the planned expenditures on and output of final goods and services. ठीक है, अगर ये ऑन एंड ऑफ में आप कंफ्यूज नहीं होते, मैं आपको ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ के बताती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या शो करे, planned expenditures on the final goods and services, okay, and the aggregate supply shows the planned expenditures of final goods and services at different aggregate price levels, okay. All other conditions held constant, the conditions that we studied in the start of these slides today. Now at the intersection of aggregate demand and aggregate supply curves, ठीक है ना, the planned expenditures on final goods and services are equal to real GDP at P naught. That is, जब इस point पे हमारे पास जहाँ पे intersection हुआ है of aggregate demand and aggregate supply curves, so the planned expenditures by the business, ठीक है ना, on the final goods and services, they are equal to the real GDP. जो real GDP हमने study की हमारे previous chapter में in detail at the given prices, that is P naught. बेसिकली ये जो छोटा सा जीरो है इसको नॉट कहते हैं, और ये नॉट इनिशियल प्राइसेस, इनिशियल आउटपुट या इक्विलिब्रियम आउटपुट को शो करता है. फिर जब हम इस प्राइसेस से मूव करेंगे तो हमारे पास P1, P2, Y1, Y2 या AD1, AD2, AS1, AS2 आ जाता है. तो देयरफॉर ये हमारे पास वो पोजीशन है जहाँ पे हमारी प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स सर्विसेज जो है वो हमारी रियल जीडीपी के इक्वल है.
when your planned expenditures are on the final goods and services they are equal to the real GDP, तो हमारे पास आ जाता है equilibrium. It also shows the planned aggregate expenditures. ठीक है, सही. Planned aggregate expenditures that the consumers are making and they are equal to the current output of goods and services. यानी कि जितनी expenditures हम कर रहे हैं वो exactly किसके equal है, जितने goods and services हमारी economy में produce हुए हैं. I hope it is clear to you. Over here at equilibrium, in this diagram at this point, this is equilibrium point. Now, equilibrium से तो आप सब लोग वाकिफ हो. Everyone knows what equilibrium is. So at this point, the planned aggregate expenditures, जो expenditures हम लोग कर रहे हैं, वो किस चीज़ के equal है? जो expenditures business ने किए थे goods and services को produce करने के. So therefore, it means that we are at equilibrium on this point. We need to explain the aggregate demand and aggregate supply relationships indicated by the slopes of positions of AD and AS lines in the diagram before we use the model to study output and prices. Aggregate demand का slope negative slope है, aggregate supply का slope जो है positive slope है, और इनके slopes को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. कह रहे हैं कि इसको slope इन slopes को जब हम study करेंगे तो फिर हमारे पास क्या, हम इस मॉडल को further we will be able to use the model to study output and prices. अच्छा, एज पर दिस डायग्राम, ठीक है ना, सही. यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. And again, what it is telling us is that planned expenditure equals the current output and provides business revenues that covers the current cost, including the expected profits. यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई थी, एग्जैक्ट उसी स्टेटमेंट को इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है, जो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स कर रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. यहाँ पे रियल का वर्ड ये यूज नहीं हुआ, ये करंट आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है ना, सही. जो एक्सपेंडिचर्स कंज्यूमर्स कर रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दे आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर्स व्हिच द बिजनेस हैज मेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. देयरफॉर इट प्रोवाइड्स द बिजनेस रेवेन्यू जो कि उस कॉस्ट को कवर कर सके और उसके साथ साथ उसको प्रॉफिट्स भी मिल सके. जब रेवेन्यू में से कॉस्ट आप निकाल देते हो, बाकी जो आपके पास बच जाता है वो आपके पास प्रॉफिट बच जाता है. तो देयरफॉर इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होंगे तो बिजनेस के पास प्रॉफिट भी आ जाता है. तो हमारे पास aggregate demand is planned expenditure on final goods and services at different price levels when all other conditions are constant. This relationship is examined in detail in the chapters that follow. इसी को हम further भी study करेंगे और ये पूरा chapter जो है it is basically concerned with aggregate demand and aggregate supply in detail. यहाँ पे सेकेंड लाइन में यही बताया था कि हमें स्लोप को स्टडी करना है, अब हम ऊपर आ जाते हैं स्लोप्स पे, ठीक है. A downward sloping aggregate demand curve means the relationship between planned aggregate expenditures and the general price level is negative. सिंपल क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि उसकी डायरेक्शन ऊपर से इनके वर्टिकल एक्सिस की साइड से जब हम देखें तो वो ऊपर से नीचे हमारे पास आता है. तो उसका रीज़न क्या है कि जब प्राइसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना कम हम उसको कंज्यूम करेंगे, उतना कम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो देयरफॉर जो प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स है और प्राइस लेवल है उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज नेगेटिव. When the prices decreases, then the planned expenditures will increase. When the prices decreases, then the planned expenditures will increase. ठीक है. Okay, a higher price level reduces the expenditures planned by households, businesses, and residents of other countries. Exactly इसी तरह जब लेबर अपनी वेजेस को बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है ना, when labor demands higher wages, तो फिर बिजनेस क्या करता है, वो कम लेबर को हायर करता है. जब कैपिटल एक्सपेंसिव होता है तो बिजनेस कम कैपिटल को एम्प्लॉय करता है, ठीक है. तो इस जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो
सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिसका प्राइस के साथ रिलेशनशिप है, they can be concerned with the household as well as business. At higher price level, it reduces the expenditures planned by both households, businesses, and the residents of other countries. यानी कि अगर हमारे गुड्स की प्राइसेस जो है जिनको हमने एक्सपोर्ट करना है, अगर वो ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उस पर फॉरेन रेजिडेंट्स जो है विलिंग नहीं है उसको पे करने के लिए, तो अगेन हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर एक्सपेंडिचर्स फॉरेनर्स भी कम करेंगे। एंड लोअर प्राइसेस अगर होंगे तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज इट विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर प्लान्स बोथ बाय द हाउसहोल्ड्स। गुड्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो हाउसहोल्ड्स के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो जाएंगी, लेबर अपनी जो है कॉस्ट को यानी कि अपनी वेजेस को कम कर देगा, तो फिर बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर करेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारे गुड्स की प्राइस फॉरेन मार्केट में भी कम होगी तो फिर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व को स्टडी करेंगे तो हमारे पास इट इज द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसेस प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स व्हेन कंडीशंस आर कांस्टेंट। ये जो व्हेन कंडीशंस आर कांस्टेंट, ये उन कंडीशंस की बात हो रही है जो कि बिल्कुल हमने स्टार्ट में कंडीशंस पढ़े, जो दो कंडीशंस थे, ठीक है। Now the upward sloping aggregate supply curve in figure 5.1, it assumes that the relationship between the quantity of goods and services produced and price level is positive. Why? Because the price and the output rise or fall together. अब यहाँ पे आप लोगों ने आउटपुट को कंफ्यूज उस आउटपुट से नहीं करना जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है। ओवर हियर इट इज कंसर्न विद दैट आउटपुट जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया एंड इट इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। यहाँ पे चैट बॉक्स में किसी ने एक स्टेटमेंट लिखी थी, तो अब देखो ना वही स्टेटमेंट अगर आप उसको स्टडी करोगे दोबारा तो वो इस तरह से आएगा कि जो आउटपुट प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है अगर उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी, ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल क्या है कि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को सप्लाई करेगा। ठीक, वाई? बिकॉज लोग उसको ले रहे हैं, प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से अब हम इसको स्टडी करें, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं। प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव और कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन दिस केस। So therefore, it is always like the incentives for profits increases for the businessman more when the price of its good increases। और फिर क्या करेगा जब उसको पता चलेगा मार्केट की प्राइस जो है, सॉरी इसका गुड जो है वो हायर प्राइस पे सेल आउट हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड को मार्केट में सप्लाई करेगा। What economic conditions and events determine the position and slope of aggregate demand and aggregate supply? अब हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्लोप्स जो है इनकी पोजीशंस डिटरमिन होंगी। नाउ वी विल मूव टू दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक।